Beta, for today, all of you, please mark your attendance in the chat box. So I'll just save your chat in the end. So जैसे हमने देखा था first order differential equation, I mean for the system of differential equations. So only thing is, जैसे आपके पास पहले function f होता था, वैसे ही अब हमारे पास function g आ जाएगा. So Euler method will be yi plus 1 is equal to yi plus h into f of xi yi zi. और zi plus 1 में क्या हो जाएगा? f की जगह हमारे पास g आ जाएगा. Similarly, we have seen second order, fourth order, right? So now let us see how to solve system of equation, this second order differential equation with the help of your existing method. अब हमें पता है what is the second order differential equation. So in general, second order differential equation is given by d square y by dx square is equal to some function. So you see, this is a second order differential equation in general. D square y by dx square is equal to some function. So here this function f can be some function of x, it can be some function of y, or it can be some function of y. अब since यहाँ हमारे पास second order की equation है, so we will have two initial conditions. So first condition will be y of x naught is equal to y naught, और दूसरा हमारे पास first derivative के लिए भी initial condition होगी at x naught. So here the point is at x naught. At x naught we have two conditions, y of x naught is equal to y naught and y dash of x naught is equal to y naught. So now what we have to do, we have to solve this second order differential equation. So हम क्या करेंगे, इस second order differential equation को we will convert in system of equations by making a substitution, and उसके बाद हमें solve करना आता है. So what we will do, so we have what? We have d square y over dx square is equal to some function. So what we will do, we will take dy by dx is equal to z. Moment you have taken dy by dx is equal to z, so अगर मैं इसका एक बार और derivative लूंगी, so d square y by dx square will be how much? This will be dz by dx. So therefore, the system becomes you see d square y by, so if you focus on this equation, so what is it? So d square y by dx में क्या बन गया? dz by dx. So dz by dx is equal to f of x y. अब y dash, if you see here, what is this? This is nothing but y dash, derivative of y with respect to x. So y dash is nothing but z. Now what is z? Z is nothing but dy by dx is equal to z. So we have one equation is dz by dx is equal to f of x y z. Another equation is dy by dx is equal to z. So we have two equations now in two variables. One equation is in terms of y, so dy by dx is equal to some function of x, y, z. Another equation is in terms of z, so dz by dx is equal to f of x, y, z, and dy by dx is equal to z. So now I need two initial conditions. One initial condition is given y of x naught is equal to y naught, और जो दूसरी initial condition given है y dash at x naught. So you see, this is nothing but what? What is y dash? Y dash is z. So z of x naught is z. So ये वही system बन गया जो हमारा कौन सा system था? हमारा system of equations वाला system था. जैसे ये वाला क्वेश्चन था, हमने किया था. If you see dy by dx is equal to some function, dz by dx is equal to some function. तो अगर आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे भी क्या बना दिया है? dy by dx is equal to some function, that function is z. dz by dx is equal to some function, that function is f of x, y, z. Two initial conditions we require. So y of x naught is equal to y naught is one condition, and z of x naught is equal to z naught is another condition. Beta, is it fine? Girls, clear है सबको? Let us take question on this. So you are given this system, you are given a second order differential equation. So this is the equation which is given to you.
d square y dx square plus 2 dy dx plus y is equal to 0. So you have to solve this equation. Now what else is given? Y of 0 is equal to 0 and y dash of 0 is equal to 1. So you have to solve this equation for Runge-Kutta method with your Runge-Kutta method of fourth order, and you have to find the value at x 0.1. So we have to find the value of y. So since this is a long method, we can just simply take h as 0.1. तो एक iteration लगाएंगे हमारे पास हो जाएगा. Now since we have second degree equation, so let us take, so this is the fixed step. Let us take dy by dx is equal to z. तो यहाँ से क्या आ गया? d square y by dx square is equal to dzx. So what you see, let me name this as 1. So from 1, अब d square y dx square की वैल्यू कितनी है? dzx प्लस 2 dy by dx की वैल्यू कितनी है? z प्लस y is equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? dz by dx is equal to minus 2z minus y. और दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी? So this is my first equation. जो आपने सब्स्टिट्यूशन ली थी, dy by dx is equal to z. So this is my second equation. Where what is the initial condition? Y of 0 is 0 and y dash is nothing but z, and z of 0 is equal to. So you have now system of equation. So given system becomes dy by dx is equal to z, dz by dx is equal to minus 2z minus y, x naught is 0, x naught पे y की वैल्यू है 0 और z की वैल्यू है 1. बेटा इज इट क्लियर? ये वही सिस्टम बन गया जो हमने पिछली उसमें सॉल्व किया था. बेटा इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा यहाँ तक क्लियर है? So now let us apply RK method. So RK method, if you remember, so we'll be parallelly applying this method for x, y and z. Right? So we know what is K1. तो पहले हम K1 निकालते हैं. So K1 is what? K1 is f of h into f of x naught, y naught, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? Z naught आ जाएगा. Now what is function? So आपको पता है dy by dx is equal to f of x होता है. So यहाँ से f of x, y, z कितना हो गया? जो dy by dx के साथ है, that is z. और जो अगर आपको जो z का फंक्शन होता है उसको हम नाम दे देते हैं g. So g of x, y, z कितना हो गया? That is minus 2z minus y. तो जो g के साथ है, जो z के साथ था, हमने उसको g नाम दे दिया. So minus 2z minus y. जो y के साथ है उसको हमने नाम दे दिया f. So h, so this is how much? h is 0.1 into f of, so function में सिर्फ z आ रहा है, so ये सिर्फ z naught हो जाएगा. z naught कितना है? z naught is 1. So this is 0.1. So k1 की वैल्यू आ गई 0.1. Similarly, parallelly हम क्या निकालेंगे? हम p1 निकालेंगे. So p1 will be how much? p1 will be h times f की जगह क्या आ जाएगा? g. बाकी सब कुछ same, x naught, y naught, z naught. So you see h is 0.1. Again z naught is how much? अब फंक्शन चेंज हो गया. फंक्शन क्या बन गया? minus 2z minus y. So फंक्शन क्या आएगा? minus 2z naught minus y naught. y naught is 0, so no problem. z naught is 1, so minus 2. So ये क्या बन गया? minus 0. गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है सबको? बेटा इज इट फाइन? अब हम K2 निकालेंगे. So K2 will be what? If you remember, RK method में क्या होता है? K2 is f of x naught plus h by 2, y naught plus k1 by 2, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? z naught plus p1. और सेम यहाँ पे अब p2 आ जाएगा. p2 will be what? h into f की जगह g आ जाएगा. x naught plus h by 2, y naught plus k1 by 2 and z naught plus p1. So
let us just do one more step here. So this will be h is how much? H is 0.1. x naught कितना था? x naught 0 था और h कितना था? h was 0.1. तो h by 2 कितना हो जाएगा? 0.05. So x naught is 0. So 0 plus 0.05 is 0.05. Y naught is 0. So K1 by 2. K1 was also 0.1. So ये भी कितना बन जाएगा? 0.05. And Z naught was how much? 1. And P1 was how much? 0.2. So that was with minus sign. So 1 minus 0.1. So 0.9. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? Again the same thing. H is 0.1. G of 0.05. 0.05. And this will be Z naught. Z naught कितना है? Z naught is 1. So 1 minus 0.1 is 0.1. So ये कितना बन जाएगा? This is 0.1 into only Z, because f of x, y, z is only Z. So this is 0.9. So this will be 0.09. And what about this one? So this will be 0.1 into minus 2Z. So Z is 0.9. 2 से multiply करेंगे तो 1.8 हो जाएगा. Minus y. So this will be minus 1.85. Already 0 bahar hai, minus 0.1. And this will be 0.09. And last is K3. So K3 will be again h f of x naught plus h by 2, y naught plus यहाँ पे आ जाएगा K2 by 2 और यहाँ पे आ जाएगा z naught plus P2 by 2 और यहाँ पे पैरेलली क्या आ जाएगा? P3 आ जाएगा. So P3 will be h into f of x naught plus h by 2, y naught plus K2 by 2 और यहाँ पे आ जाएगा z naught plus P2 by 2. बेटा is it fine? बेटा क्लियर है सबको? गर्ल्स यहाँ तक क्लियर है सबको? राइट. सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम हियर नाउ. So if you see, this is what we are doing. So h is 0.1, x naught was 0, so h by 2 0.05, right? Y naught was 0 and K2 was 0.09. तो इसका half करेंगे तो 0.045 बन जाएगा. तो 0 this. Again Z naught is 1 and P2 is minus 0.185. इसका half करेंगे तो you will get this number. So just put the values in the function. K3 मिल गया, इधर से P3 मिल गया. Finally, what is K4? K4 is h into f of x naught plus h, y naught plus K3, z naught plus P3. ये सारी वैल्यूज हमारे पास है. फंक्शन की वैल्यू सिर्फ z पे डिपेंड करती है तो z आ गया. और इधर P4 is what? h into g of x naught plus h, y naught plus K3, z naught plus P3. So just put all those values in the functions, we get the value of P4. And finally, what is y1? So y1 is what? Y naught plus 1 by 6, K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. So we get the value of y. Similarly, what will be Z1? Z1 will be Z naught plus 1 by 6, P1 plus 2P2 plus 2P3 plus P. So again, all these values are with me, right? So we can find the value of Z at 0.1. अब Z हमने खुद से लिया था, हमें Z की वैल्यू मिल गई है at 0.1. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? बेटा is it fine? Yes, ma'am. Right. So any doubt in this method? So Z हमने खुद से लिया था, तो Z was nothing but dy by dx, right? Ultimately हमें वैल्यू सिर्फ y की निकालनी थी, तो that is the reason we have calculated y. But otherwise Z1 can be calculated with this. So Z1 is nothing but dy by dz. But since we are not interested in dy by dz, we only want the value of y. So we get the value of y. But here if you see, this y is depending upon these values. So that is the reason we have to bring y in the picture, z in the picture. So ultimately y is this value.
So if you see, all the questions in the exercise are same. This is Rangi-Gould method of second order. So here you have to find the value using Miller's method. तो जैसे हम मिले मेथड में करते थे, तो आपको पता है मिले मेथड में हम 4 वैल्यूज को यूज करते थे. तो जहां जहां फंक्शन f होगा, वहां वहां z की वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन कौन सा यूज कर लेंगे, g यूज कर लेंगे. वहां यहाँ पे हमारे पास x y z आ रहा है, आई मीन ओनली द फंक्शन ऑफ x y. अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन ऑफ x y z भी आ जाएगा. बेटा इज इट फाइन? बेटा सबको क्लियर है? Let us just solve this one. Let me give you just first iteration for Miller's method. So अगर आप देखो, here you have what? For the second question, let us take dy by dx is equal to z. So हमारे पास क्या आ जाएगा? dz by dx will be nothing but what? d square y by dx. So here d square y by dx का मतलब क्या हो गया? z. So dz dx plus x dy by dx कितना हो गया? z plus y is equal to 0. So what the system becomes? So dz by dx is equal to minus xz minus y. dy by dx is equal to z. यही होता है हमारे पास. अब अगर आप देखो, हमें मिलने मेथड में 4 इनिशियल कंडीशंस दी होती है. तो यहाँ पे अगर आप देखो, y of 0.1, y of 0 is 1, y of 0.1 is 0.995. Ritika, please mute yourself. Then y of 0.2 is 0.9805 and y of 0.3 is how much? 0.95 approximately. And if you see, now the next conditions are for y dash. So y dash का मतलब क्या हो गया? Y dash is nothing but z. So z of 0 is how much? 0. Z of 0.1 is how much? 0.995. Z of 0.2 is minus 0.1973 and Z of 0.3 is minus 0.2865. So again, जो function y के साथ है, just हम because हम already उसको नाम already f देते हैं, तो let me call this function as f of x y z and let me call this function as g of x y z. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? Any doubt? Girls, is it clear all of you? This is जो z के साथ फंक्शन है उसको हमने g नाम दे दिया, जो y के साथ फंक्शन है उसको हमने नाम दे दिया f. अब हमें क्या चाहिए? हमें मिले मेथड से we want to find the value of y. We are only interested in the value of y. z हम खुद से पिक्चर में लाए हैं. तो हमें पता है मिले मेथड में we have predictor and the corrector method, right? So we have y4. Let us calculate y4. हमें वैल्यू निकालनी है 0.4 पे. So what we will do? We will take h as 0.1. We will take h as 0.1. So we will only do one iteration. So y4. So first is predictor, right? So we know y4 predictor formula is what? Y0 plus 4h by 3 2f1 minus f2 plus 2f3. But is it fine? So here f1 is what? F1 is the value of the function. So here now, what is f1? So f1 is the value of the function, that is f at x1, y1, z1. Similarly, f2 will be what? Value of the function at x2, y2, z2. And similarly, f3 is what? F3 is the value of the function at x3, y3, z3. And the functions are given to you. This is f, this is g, and this point is x. This point is x0. So x0 is, let me rub the upper portion. So I'm writing here only.
So what is x naught? So x naught is 0, x1 is 0.1, x2 is 0.2, and x3 is 0.3. So what is y naught? Y naught is the value here at 0, that is 1. Y1 is 0.9950. So you see, this is y1, this value is y2, this value is y3. Similarly, this value is z1, z0, z1, z2, z3. Beta, is it fine? Beta, is it fine? तो आपके पास y naught भी है 4h/3, h भी है 2f1. f1, what is this function? This function is nothing but f1. f1 is only dependent on z. तो f1 की वैल्यू आ जाएगी z1, f2 की वैल्यू आ जाएगी z2 और f3 की वैल्यू आ जाएगी z3. But is it fine? So what this will become? Y naught. Y naught कितना है आपका? Y naught is 1 plus 4, 0.1 over 3, 2. f1 की वैल्यू कितनी है? z1. z1 कितना है हमारा? 0.995 minus f2. f2 is nothing but z2. z2 की वैल्यू कितनी है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.1973 and plus 2 times f3. f3 is z3 और z3 की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.2865. बेटा ये क्लियर है सबको? गर्ल्स, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो ये आपकी कौन सी वैल्यू निकल जाएगी? ये आपकी निकल जाएगी वैल्यू y4 की प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट? अब देखो, इसके साथ साथ ही आपको निकालनी पड़ेगी z4 की प्रिडिक्टेड वैल्यू, बिकॉज करेक्टेड वैल्यू में हम प्रिडिक्टेड वैल्यू यूज करते हैं. तो z4 की प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या बन जाएगी? z0 प्लस 4h3 2g1 माइनस g2 प्लस 2g3. So यहाँ से z0 की वैल्यू इज हाउ मच? z0 इज 0 प्लस 4, h कितना है आपका? 0.1 over 3. अब g1 कितना है आपका? What was the function g? What was the function g? g is minus xz minus y. So g1 कितना हो जाएगा? Minus xz. So x1 z1 minus y1. These values you have, x1 भी है, z1 भी है, y1 भी है. g2 कितना हो जाएगा? Minus x2 z2 minus y2. Similarly g3 कितना हो जाएगा? Minus x3 z3 minus y3. So moment you have all these three values, so you will put all these three values. यहाँ से आपको z4 predictor मिल जाएगा. Beta, is it fine? Girls, clear है? बेटा हो जाएगा ये? बेटा yes, no? So now if you see, okay, so अब हमें f, अगर आपको याद हो करेक्टर मेथड में हम f4 यूज करते हैं, तो f4 प्रेडिक्टर क्या होगा? So this is the value of f at x4. So y4 predicted and साथ में क्या आ जाएगा? z4 predicted. तो ये जो z4 predicted की वैल्यू है ये हमने ऊपर निकाली हुई है. So finally the last step is, so here in this case since the function xyz is nothing but z, so ये आंसर आ जाएगा z4p. And finally what is the formula for the corrector value? What is the value of y corrected? So y corrected is nothing but, so y4 corrected is nothing but y2 plus h/3 f2 plus 4f3 plus f4 predicted. f2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, f3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर ली थी, f4 प्रेडिक्टेड की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, h is 0.1, y2 is already there, so we will put all these values and we will get the value of y4 predicted. Beta, is it fine? Girls, clear है सबको? Yes, ma'am. Right?